नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मानवता का ओरिजिन अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ में ही सोन और झोला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए आपका जो है सेशन कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे थे मैकेनिकल का, तो गेट 2020 का फर्स्ट सेशन फोरनून सेशन तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे की ओर अग्रसर रहते हैं, जो कि अब देखने वाले हैं। गेट 2020 का 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो फोरनून हो गया। अब आफ्टरनून सेशन में हम देखते हैं। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा गेट जो लिया हुआ है आईआईटी दिल्ली ने। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, while I agree blank his proposal this time, I do not often agree blank him time to with and to which is to be a true over here. While I agree to his proposal this time and I do not often agree with him. It's option number A as in right option for this. Moving ahead for the next question. Recent measure to improve the output would blank the level of production of our satisfaction. Increase, decrease, speed or equalize, which is to be a true over here. It is to be a increase. A आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव अहेड करते हैं। वाइटनिंग लाइट का लाइटनिंग, लाइटिंग, लाइटिंग और इनलाइटनिंग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट वन which is to be a true over here, लाइट का लाइटनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी ओमनी की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी एज यू लाइक। We have to further move ahead. In one of the greatest innings ever seen in 142 years of the Test history, Ben Stokes upped the tempo in a 5.5 hour long stay of 219 balls, including 11 fours and 8 sixes that saw him finish on 135 not out as squared the 5 match series based on their connotations in the given passage. Which one of the following meanings does not upped increase, squared lost, tempo enthusiasm saw resulting? तो आपका जो है कौन सा डज नॉट मैच होगा? सो इट इज टू बी true over here is yeah. It's a B. Remaining is to be a justified one. Up in great tempo, enthusiasm, and saw result. Squared or lost is to be different. So it is to be the option number B is to be easy peasy a right option for this choice. Dancing down the track, we have to move ahead for the next question. Question is to be asked. There are 5 levels PQRST in a linear supply chain before a product reaches customer as shown in the figure. P, Q, R, S to the customers. At each of the 5 levels, the price of the product is increased by 25%. If the product is produced at a level P at a cost of rupees 120 per unit, what is the price paid in rupees by customer? 187.5, 234.38, 292.6, 366.21। तो अगर हम यहाँ पे गौर फरमाते हैं तो आप किस हिसाब से लगा सकते हो पी क्यू आर एस टी टू द कस्टमर। तो यहाँ पे जो है आपको जो है 120 जो है ईच कस्टमर को दे रहा हूँ। अब पे पैरिटी हमारी इंक्रीज कर रही है एवरी टर्म्स 1.25, 125% एंड कितने हैं
PQRST, 5 टर्म्स है। तो द व्हाट इज द प्राइस पेड टू द कस्टमर, इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। तो 366.21 इज योर राइट ऑप्शन, is to be a Tally Express. Now, the climate change and resilience deal with two aspects: reduction of source of non-renewable energy resources and reducing vulnerability of climate change aspects. The terms mitigation and adaptation are used to refer to these aspects respectively. Which of the following assertions is best supported by the above information? Mitigation deals with consequences of climate change. Adoption deals with causes of climate change. Mitigation deals with actions taken to reduce the use of fossil fuels. Adoption deals with actions taken to combat greenhouse gas emission. So which is to be a true over here? Alpha, beta, Charlie, delta, which is to be a true over here? सो अगर हम ये आसानी से पढ़ते हैं, कुछ नहीं, लैंग्वेज को जो है आपको ब्रेक करना है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन को करेक्टली फेच होता है। इट्स ए मिटिगेशन डील्स विथ consequences of climate change, easy as you like. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंच रहे हैं, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग। ओके, इस तरह से जो है सर्कल घूम रहा है, दिया हुआ है DEWY। अगर आप जो है गौर फरमाएंगे तो अगर एन दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है 5 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 9 हो रहा है। जिस तरह से लिख रहा है कुछ चीज़ें आपका 9 बना रही हैं, तो मतलब 5 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 9, तो मतलब कि n की वैल्यू जो है 4 के इक्वल हो रही होगी। देन आपका जो है t प्लस समथिंग इज इक्वल टू x हो रहा है। t क्या होता है? 20। t के नोटेशन कितने होते हैं? 20 एक्सट्रीम्स में। n प्लस 4, 24 विच इज टू बी x, ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सीरीज h प्लस समथिंग इज इक्वल टू कुछ वैल्यू निकल के आएगी। h की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितनी होती है? h इज इक्वल टू 8 प्लस 4, 8 4 12, 12 किसका होता है? l। सो सॉरी, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से देखूं, ये बना रहा है, मतलब समथिंग प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू 8 minus 4 is equal to 4, whose annotation is to be D। ओके, सल्तनत काबिज हो गई। बाकी जो ऑप्शन आ रहा था वो तो था ही नहीं ना, तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रीम कंडीशन जो है आपका रीच आउट कर रही है। 8th number, it was estimated that 52 men can complete a strip in a newly constructed highway connecting cities P and Q in 10 days. Due to an emergency, 12 men were sent to another project. How many number of days more than the original estimate will require to complete the strip? 3, 5, 10 or 13 days? Okay, तो आपको दिख रहा 52 men can do in the 10 days. Then the remaining man left. 52 men and done 10 days में 12 men were set out। भैया 12 जो है आपने निकल लिए। ओके, तो बचे कितने? 40। आपको जो है मैन डेज M1 MD1 इज इक्वल टू M2D2, ये फॉर्मूला होता है, ये तो पता ही है। सो हियर इट इज 52 इंटू 12
40 टाइम्स ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें 13 डेज रिसीविंग एंड पे प्राप्त होती है। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज मोर देन द ओरिजिनल एस्टिमेटेड। तो ये जो है ओरिजिनली हमारे कितने दिन थे, 10 डेज। आपके जो है 13 से करते हैं तो 3 डे, which is to be A as an alpha is your right choice for this. Next, an engineer measure three quantities x, y, and z in an experiment. He finds that they follow a relationship that is represented in figure below. The product of x and y linearly varies with x, y, and z दिया हुआ है। तो कौन सा जो है false statement is false. For fixed z, x and y, x is proportional to y. For fixed y, x is proportional to z. For fixed x, z is proportional to y. X, y by z is constant. So which is to be a true over here. आप गौर फरमाएंगे कर्व दिया हुआ है तो आपका जो है और फिक्स्ड जेड एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, दोनों जबकि एक में दिया हुआ है तो ये वाला जो है फॉल्स नैरेटिव आपका यहाँ पे चीक चीक के बताता हुआ है। नाउ easy peasy, the question number 10. The two pie charts given below show the data of total student and only girls registered in the different stream university. If the total number of students registered in the university is 5000, total number of registered girls is 1500, then the ratio of boys enrolled in arts to the girls controlled in management. ये यूनिवर्सिटी के और ये आपका गर्ल्स दिया हुआ है which is to be a true over here for the management में गर्ल्स पूछ रहा है। आपका टोटल जो है रिक्वायर्ड जो है 1500 दिया हुआ है। आपका बॉयज वर्सेस गर्ल्स का रेशियो, बॉयज बाई गर्ल्स मैनेज and boys to arts, therefore 20% of 1500 यहाँ पे 5000 माइनस 30% ऑफ 1500 divided by girls in the ratio of 15% 1500. So there is to be a, here it is to be percent 5 to the 1000, 1000 minus 30 15 45 450 15 15 15 हम 225 टू 5, तो विच इज टू गया 450 गया है 650, 6 4 10, 550, 550 बाई 225 तो 2209। इट्स अ टैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव ऐड करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना जो हार्ड कोर सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं, ये रहा टेकी टेकी। शैल वी मूव अहेड। The sum of two normally distributed random variable x and y is always normally distributed. Normal distributed only if x and y are independent. Normally distributed x and y have the same standard deviation. Normally distributed only if x and y have same mean. So which is to be a true over here? A else graph. Solver is normally distributed. The sum of two normally distributed random variable x and y is the alpha, always distributed.
it is to be a always non-distributed. The sum of non-distributed random variable x and y to be over here. X1 is u1 and sigma x is to be and times u2 2. Therefore, x1 plus x2 opposed to and mu1 and 2 and square root of दोनों का square. So always to be a normal distributed. And next we have the equations over here. A matrix P is decomposed into a symmetric part S. Symmetric part is to be a V S and V. Then the matrix P is to एक क्लासिकल केस होता है आपका सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक का जो है ना दोनों का कंपोजिट कुछ होता है एस का वैल्यू दिया है p प्लस ट्रांसपोज बाई 2 एंड v इज इक्वल टू माइनस p ट्रांसपोज बाई 2 सिमेट्रिक कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा और स्क्यू सिमेट्रिक कुछ इस दिखेगा then there is to be value of our p s plus b is equal to minus 4 5 6 3 7 minus 1 0 ये value so it is to be a r generate 3 4 to 5 6 3 7 that is the easy peasy irreducible. Next question, let I is equal to integration 0 to 1 and y is equal to 0 to x square x y square dy dx. Then I may also be expressed as 0 to 1 0 to root y x y square dx dy 0 to 1 by 1 yx square x yx square dx dy 0 to 1 by 1 xy square dx dy and yx square dx dy. It is to be expressed over आपको आई की वैल्यू देख अगर कोऑर्डिनेट is y is equal to x square 1 पे डिटैच हो x 1 यहाँ पे दिखेगा कर i is equal to रो y and x is equal to 1 यहाँ पे आपको देना है चेंज ऑफ ऑर्डर तो कुछ इस तरह से जनाई देगा x और y वैल्यू एक जो है अगर मैं बोलता हूँ x is equal to 0 to 1 0 to 1 and y is equal to 0 से x square vertical strip and horizontal strip vertical से horizontal तो अगर जो है x 0 से 1 है तो y is equal to 0 से 1 लहलाएगा then x की वैल्यू चेंज होगी in the order changing में x की वैल्यू and xy square times of dx dy here x is equal to square root of y so
up to 1. Let's say C Charlie. Let's say C as in Charlie value is to be registered. Now, the solution of d square y by dt square minus y is equal to 1, which addition satisfies the yt is equal to 0, dy by dt t is equal to 0. The Laplace S domain is to be over here. तो आपको जो है y double dash y is equal to 1. Y of 1 दिया हुआ है. ऑन दैट नोट, अगर हम इसे लाप्लास में देखते हैं y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 1 देखते हैं तो कुछ इस तरह से होगा. एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0 माइनस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाई एस. वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपन एस स्क्वायर माइनस 1. कुछ इस तरीके से बनेगा. एस स्क्वायर माइनस 1 कुछ इस तरीके से अपना जस्टिफाइबल है. A is your right choice for this. Now, next question, fifth one. An attempt is made to pull a roller of weight W over a cart step by applying a horizontal force F as shown in the figure. Okay. The coefficient of static friction between the roller and the ground, including the edge of the step, identify the correct V body diagram BD of the when they just about to climb over step. भैया ये जो है ना डिच के ऊपर चढ़ना है, ये बहुत ही क्लासिकल अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा. देखो यहाँ पे तो है कोई सपोर्ट अटैच नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन भी होने का नहीं है, सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट है और डिच से स्टेप जो है आपको ओवर अप हो रहा है. तो इट्स ऑप्शन नंबर बी. बी इज योर राइट चॉइस. इट्स reaction W as in weight, R and then after F as a force. It's a B. Wow. Next question. आगे बढ़ते हैं. A circular disc of radius R is confined a roll without a slipping of paint जो as shown in the figure. Okay, प्लेट जो है ये आपका इस तरह से निकल रहा है, यहाँ पे 2 भी निकल रहा है. R as in radius P और 0 इस तरह से दिख रहा है. तो it's a V by R 2y by R 3y by 2R which is the velocity is to be the V and 2v velocity. R as in Vp is equal to ER omega. Vp Q is equal to 2 which is QR omega, which is value is to be QR upon ER. QR value is equal to 2 times of QR square is of QR R square by S or the 3 times of 3 pair 2R by 3. V is equal to 2 by R times of omega.
the omega is to 3 by 2r, which is to be 2 over the t daily value. It's option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव अहेड करते हैं. द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम इज गिवन एज del square x by dt square plus 3 del t by del t plus 9x equal to 10 times of 5 damping factor of the system is to be over here. अच्छा भैया डैम्पिंग निकालना है, जीटा निकालना है आपको, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी एक्स डबल डॉट नो जीटा ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन टाइम्स ऑफ ओमेगा टी. ये होना चाहिए तो ओमेगा एन की वैल्यू 3 के बराबर, थीटा इंटू ओमेगा एन कितना हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एन इज 3 इज इक्वल टू 3, तो जीटा 0.5. इट्स ब्रावो. नेक्स्ट वैल्यू, the number of qualitatively distinct kinematic inversion possible for Grashof chain with 4 revolute here is to 1 2 3 4. ओके, अपने को पता है ग्रेशॉफ में p प्लस शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज लेस देन इज इक्वल टू 4 होता है. यहाँ पे रिवॉल्यूट 4 रिवॉल्यूशन दिख रहा है, 4 रिवॉल्यूट पेयर दिख रहे हैं. अगर इस डायरेक्शन में तो हमें कितने अरेंजमेंट प्राप्त होंगे, इस चाले, तो हमको क्या क्या मिलते हैं अरेंजमेंट, क्या क्या मिलते हैं इससे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है, क्रैंक के साथ रॉकर रॉकर मैकेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द प्रोसेस दैट we were on off by the and for mechanical energy or machining, electrochemical machining, electrical discharge, sonic machining, compressive jet machining, which is to be a true over here. Alpha, beta, Charlie, delta is to be a true. ये अगर हम देख रहे हैं किसे मशीन कर रहे हैं भैया, एम्पलीफाई एंड और मशीनिंग ग्लास, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग बहुत आसानी से होता है. चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. टू आर what will do following this and select the correct sequence in increasing order of size of EFT R big laser and submerged. तो आपको जो है इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, सबसे लास्ट में बड़ा होता है. तो सबसे पहले जो है हम क्या देखता है, लेजर बीम मोशन, देन मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, then submerged arc welding, and then arc welding. So here arrangement is to be correct. HAZ देखना है, heat affected zone. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मूव डाउन करना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फेज डायग्राम इज टू बी इनकरेक्ट. It indicates the temperature at which different phases start to melt. Relative amount of different phase can be found under a given equilibrium condition. It gives the information on transformation, solid solubility, limits are depicted by it, which is to be a incorrect one. So फेज डायग्राम के रिस्पेक्ट में बाकी तीन स्टेटमेंट करेक्ट
है और एक जो है इनकरेक्ट. So here it is to 11 month is to be a C. 4 day. There is to be it indicates the temperature at different start to melt. Relative amount of different phase can be found under an equilibrium condition. Solid solubility limits are depicted by it. Okay. Now next, the figure below show a simulated surface texture in perpendicular plane orientation indicative values 1 6 marking the various specification whose definition are listed below. Maximum waviness height, maximum roughness height, minimum roughness height and maximum waviness width. Maximum roughness and roughness width 1. यहाँ पे ये वेल्डिंग का साइन है. Now the sixth one ABCD. तो अगर आप जो है ये परपेंडिकुलर वाला देखें maximum roughness width, it's a P over here. Then here fifth one roughness width cut off you width off. Okay, so U is to be over here 3 and 4 square root के ऊपर. So here there is to be a fourth one. Fourth is to be maximum waviness width is to be S. Be a width and there is to be a third one. Third is to be a maximum waviness height. It's a P. And 1 and 2. 1 is to be a minimum roughness height. Maximum roughness height and roughness height. तो आपका जो है is to be true to the A. This one. First में R. Then is to over is to be maximum Agra. Oh, 13 number. In material requirement planning, if the inventory holding cost is very high and the setup cost is zero, which one of the following load size approaches should be EOQ economic order quantity, lot or lot, base stock level and fixed quantity for 2 pieces. So according to the statement, the justifiable is to be lot for lot. Bravo is the right choice. Now move ahead for the next one. Which of the following condition is used to all the partially merged floating bodies? Turbines must be above the center of the gravity. Center buoyancy must be below
the center of gravity, meta center be higher level than the center of gravity. Meta center must be lower than the center of gravity. So above, which is to be a true stable equilibrium के दृष्टिकोण से तो हमें जो दिखता है let's just see at a center must be a high level than a center of gravity. So the option is to start X C stable equilibrium. Now 15 in the space above the mercury. The gauge pressure of the vapor is positive but 1 atmosphere negative to positive but less than the 1 atmosphere. Mercury above the barometer tube. Gauge pressure to the vapor is alpha, beta, Charlie, delta, which is to be true and banger. नेक्स्ट क्वेश्चन नो ऐड करते हैं a closed cell contains a pure water in whose thermal equilibrium at 20 not to scale 1 to solvent water vapor and water ambient air and at 60 degrees air at 80 to 1 atmospheric to be here the stated air vessel in the kept inside the isothermal oven which is having an atmosphere isothermal मतलब constant temperature of hot air maintaining degrees vessel exchanges heat within oven atmosphere and takes a new thermal equilibrium at stage 2 the valve very now open inside the oven what will happen immediately after opening the valve water vapor inside the vessel will come out of the valve A. Hot air will go inside the vessel valve A. Nothing will happen. Equilibrium. All the vapor inside the vessel will immediately condense. So which is to be absolutely true according to the statement. So there is to a hot air will go inside a vessel through a valve. Bravo is to be a right choice. क्यों क्योंकि आपका टेम्परेचर 100 से जो है 80 डिग्री से चेंज हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन for an air standard diesel cycle. Heat addition at constant volume and heat rejection at constant pressure. One, three, here the supply. Okay, so heat addition at constant pressure and heat rejection at constant volume. It's a Charlie, right one. The values of enthalpies at the stator inlet and rotor outlet at hydraulic turbo machine stage are H1 and H3 respectively. The enthalpy stator outlet or rotor inlet is H2. H2 minus H1 H3 minus indicate that the degree of reaction at the stage is to be 0, 50 and 75 100%. अगर आप जो है गौर फरमाएंगे ध्यान से देखेंगे the enthalpy across stator and rotor is equal अगर आप ये देखते हैं तो ये कौन से डिग्री ऑफ रिएक्शन का 50% वेटेज
It's a B. Bravo. Next question. Let I be a 100-dimensional identity matrix and be the set of its distinct no value appear real eigenvalue. The number of element is over here. So E is to 1 on that particular क्यों क्योंकि अगर I की वैल्यू देखें ओनली A की वैल्यू जो है रेपिटेटिव हो रही है up to what terms it's to be 100 terms. So the E is to be a 1 is to be right. Easy peasy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में lie down करते हैं. बोल रहा है a beam of negligible mass is hinged at support P and has roller support Q shown in the figure. Okay, ये L shape की बीम दिया हुआ है. Okay, then a point load 1200 Newton applied at point R. Magnitude of reaction force at Q is in Newton is to there is to be over here. रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं तो हियर 1200 कहाँ तक 5 फोर्स इनटू रेडियस क्लॉकवाइज सेंस देन आफ्टर दैट आपका जो है आर क्यू है आपका 4 के साथ जो है कुछ इस तरह से लगेगा तो काउंटर क्लॉकवाइज तो आर क्यू रिएक्शन 4 इज इक्वल टू 0 टाइम्स तो आर क्यू 1500 बराबर हो. Alright, we shall move ahead for the easy peasy for the next scenario and window over here. बोल क्या रहा है a machine member is subjected to a fluctuating stress sigma is equal to sigma naught cosine of 8 pi t. The endurance limit of the material is 50 Pascal if the factor of safety unit in the design 3.5 maximum allowed megapascal. Okay, fluctuating stress दिया हुआ है. एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव तो सिग्मा मैक्स नॉट एंड सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट तो मीन की वैल्यू एक बार ज़ीरो हो जाएगी एंड वेरिएबल मैक्स माइनस मिनिमम ऐड होके ओनली सिग्मा नॉट आएगा बाय द डिस्टेंस कार्डिंग. हमको पता है कि ये आपका या एक वैल्यू तो ज़ीरो है ना एम बाई ई एंड वेरिएबल बाई endurance less than value of 1 by factor of safety के बराबर. So on the safe side 350 3.5 so the endurance value is 200 mega. That's a done one. Easy. 22nd one. Bolt head has to be made at the end of the rod of diameter 12 mm by a localized forging upsetting operation. Length of supported unsupported portion of the rod is 40 mm. Avoid the buckling of the rod. Closed forging operation has to be performed with the maximum diameter in the millimeter is to be asked over here. So shall we go ahead? अगर हमको यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे तो लेंथ इज मोर देन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर तो डाई का जो डाया है 1.5 डी के बराबर. Here it is to be 1.5 times of 12 18 mm. 23 नंबर में देख रहा कंसिडर द फॉलोइंग नेटवर्क एक्टिविटीज with each activity named A to L. Illustrated the notes. Okay, start to end दिया हुआ है.
number of hours required for each activity is such alongside the nodes of the slack. The activity L is in hours is to be. So कुछ इस तरह से पाथ जा रहा है। एक जो है इस साइड हुआ है, एक जो है यहाँ से मतलब तीन पाथ आपको दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर एक्टिविटीज एल का स्लैग देखना है तो आपको जो है एल जो है फाइनल है, एल आपको फाइनल दिख। अगर मैं पाथ देख लेता हूँ, तीन पाथ दिख रहे हैं, ए बी एफ आई जे, तो कितने हैं? 6 5 11 8 19 7 25 25 10 35 6 41 8 वर्ड्स। एक और पाथ ए टू बी टू सी ई, देन एच एल, ये है। तो गिनो, 2 9 2 11 4 15 10 25 6 31 एंड लास्ट ए बी सी डी ई एच एल, कुछ इस तरह से। 11 7 18 6 24 10 24 6 40 मिल गया। तो एल पे क्या क्या मिल रहा है? 40 31 एंड 42। तो आपको जो है फाइनल पाथ में आपको क्या बोल रहा है? स्लैक, स्लैक ऑफ एक्टिविटी एल इज टू बी। तो हमको पता है कि भैया कुछ नहीं, हेड इवेंट सेक माइनस टेल इवेंट स्लैक देना होता है, हेड एंड टेल। तो मैक्सिमम 42, देन रिमेनिंग 42 आर, that is the slack. Last two question of the day. In a furnace, the inner and outer side of brick wall A1 is to be a 2.5 watt per meter Kelvin. Maintain 1100 से 700 डिग्री सेल्सियस से। ओके, यहाँ फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकेंड, ये अलग अलग मटेरियल दिया हुआ है। K1 तो K2 ही होगा, इसका इंसुलेशन है, मतलब हीट लॉस कम हो। Brick wall is covered by insulating material of the thermal conductivity K2. Thickness of insulation of 1/4 of the thickness of the brick wall, and the outer surface of the insulation is 200. Heat flux through the composite wall is in 2500 watt per meter square. The value of K2 is in watt per meter Kelvin is to be over here. It is to be asked. Yeah, अगर हम network flow, so starting temperature over is to be 1100 degrees Celsius. Then move ahead, we have to make a resistance over here. तो यहाँ कौन सा है? conduction resistance. Then a midway temperature 700 degree. Move ahead, एक और insulation का this and 200 degrees. Q Q B. This is to be there. अब यहाँ पे Q दिया हुआ है, तो there is to be a temperature difference over L times of A1 A. There is to 700 by L2 by K2. फ्लक्स क्या होता है? कैपिटल Q I A equal to heat flux is to be, so the value equal to value minus 0.5 watt per meter Kelvin. So the final value is 0.5
Right. Easy as you like. Last question of there. Now, 25 में देख रहा है in a reverse Carnot cycle operate between the temperature 27 and -3 degrees ratio of the COP of the refrigerator COP of the refrigerator per of heat pump based on the cycle after round of decimal pressure higher lower higher. Here is the condition over there is to be a reverse Carnot inside W inside so higher COP of the refrigerator to of the pump. तो डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे टी लोअर डिजायर्ड इफेक्ट में चाहिए होता है हायर माइनस एंड टी हायर बाय टी हायर माइनस ये दोनों गया लोअर बाय हायर का रेशियो होता है तो टी लोअर बाय टी हायर टू बी 270 डिवाइडेड बाय 300 0 0 मर गया तो द वैल्यू इज 0 or 9 0.9 that is the final right final 25 is to be correct answer for this right चलिए इतना ही सेशन रखते हैं लास्ट क्वेश्चन इज टू बी इतना ही रखते हैं साथियों एक काम करना है आपको ये क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है तो पूरी क्लासेस आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जीवन में हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर अग्रसर रहिए राइट ओके इट इज बी कंप्लीटेड